Today we will discuss about tunnel diodes. Basically, you need to understand two different aspects. First of all, you need to understand how a PN junction works, and secondly, how we are associating a tunnel diode with a PN junction. This is the symbol of a tunnel diode. This is the symbol of a normal diode. Right. This is the tunnel diode. And the tunneling phenomena is also found in another type of diode which has a symbol like this. This is called a Zener diode. This is a tunnel diode. This is a normal PN junction diode. This is a Zener diode. Tunneling, I think you have the basic idea of what is tunneling. So if we have a barrier, potential barrier, like this, which has a potential, say, V naught, and has a width, say, A. Width is A, this is the potential, and electron is having an energy E. So even if the electron is having a lower energy compared to E, even then it can tunnel through the barrier. Electron can tunnel through the field. Tunneling. Even if the energy of the electron is less than E. This is tunneling. Quantum mechanics phenomena. And this is the tunneling probability. And it is almost equal to the power minus 2 kappa A, where A is the width and this value kappa, it is equal to H cross 2m V naught minus So this sort of tunneling phenomena, where the electron, even if having a lower energy corresponding to the barrier, it can pass through. This phenomena is punched with the diode. इसलिए हम लोग को tunnel diode बोलते हैं. अच्छा, now why tunnel diode? What is the application? First we will go to the application, then we will understand the mechanism. Tunnel diode में जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका है, दे आर यूज्ड फॉर
high frequency oscillators. High frequency oscillators. इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेशंस किस चीज को बोलते हैं? जैसे AC, that is an oscillation, right? So पॉजिटिव डायोड कैथोड एनोड के बीच पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है. So we can represent that oscillation. मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी पोटेंशियल है, तो हम लोग उसको ऐसे we can say that it is oscillating like this, प्लस और माइनस के बीच इस oscillation. Any potential value for the potential. Okay. तो basically oscillation का होना मतलब क्या? How can we create something which is oscillating? तो देखोगे हमेशा जब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं, we always associate something called एक capacitance और एक इंडक्टेंस, है ना? हम लोग एक कैपेसिटेंस हमेशा तो भी ऑसिलेशंस की बात होती है, तो वी एक्चुअली रिप्रेजेंट जनरेशन ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन बाय अ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस. तो बेसिकली हो क्या है ऑसिलेशन? किस चीज़ का ऑसिलेशन हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे एनर्जी is getting oscillated between two forms. एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरा है मैग्नेटिक एनर्जी. इन दोनों के बीच कंटिन्यूअस एनर्जी इज गेटिंग चेंजिंग. सो दिस इज फॉर ऑसिलेशन. सो ये जो सर्किट है उसमें जो कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ. सो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. ऐसे लिखते हैं ना, इन एनर्जी एसोसिएटेड विद कैपेसिटेंस. और जो इंडक्टेंस है L बताना इंडक्टेंस. ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला व्हाट इज एक्चुअली दिस? ये जो फिगर है दिस इज अ सोलेनॉइड. एंड करंट व्हिच इज रोटेटिंग. So this is producing a magnet. Okay. So मैं यहाँ पे in this circuit I can say that VL voltage due to the inductance plus voltage due to inductance plus voltage due to capacitance is equal to 0. ठीक है. Write this one as L di by dt plus Q by C is equal to 0. What is I? dq by dt. So this I can write as d square Q by dt square plus Q by C is equal to
Okay, then I can write d square q by d square okay. So what is this q? This is omega. It is the frequency of oscillations. एक साइन और एक कॉस, एक साइनसॉइडल ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है, वहाँ पे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. So that is why we always associate whenever we are talking about oscillations. That means हमेशा इट इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक फॉर्म, दोनों में एक्सचेंज होता रहता है. और इसलिए हम लोग इसको एलसी सर्किट से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ टैंक सर्किट. टैंक सर्किट. अच्छा, नाउ वी विल कम टू व्हाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टनल डायोड्स इन अ टैंक सर्किट. नॉर्मली ये देखा जाता है कि दिस ऑसिलेशन, हाँ, इसके साथ हमेशा there is a resistance associated with the oscillation. Resistance, capacitance, ये जो ऑसिलेशंस है ये डाई आउट कर जाते हैं. दे आर नॉट ऑलवेज हैविंग द सेम. इसका एम्पलीट्यूड हमेशा इस लेवल पर नहीं रहता, इट डाइज आउट. डिकेज विद टाइम. ठीक है, इट डिकेज विद टाइम इन ऑसिलेशंस. टू अवॉइड this sort of decay, we associate that tunnel diode with this. What is the, why we associate tunnel diode? Because tunnel diode has a property which is called NDR. NDR stands for negative differential resistance. किसी भी पीएन जंक्शन में देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस. वन इज स्टैटिक, वन इज डिफरेंशियल. तो एनी जेपीएन में देयर इज एन डीसी रेजिस्टेंस simply V by I. This is a static or DC resistance. And there is an AC resistance. dV by dI. This is differential. The dynamic one goes up here. Differential or dynamic. In the case of tunnel diodes, this is actually the NDR. This is negative. For tunnel diodes, RAC is negative. नेगेटिव से क्या मतलब है? हाँ, मतलब if the voltage increases, the current decreases, or the opposite thing.
Right. So this property of India helps in avoiding this decay. कैसे? हम लोग जो टैंक सर्किट है इसके साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं एक टनल डायोड. This is how tunnel diode is associated. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द एसी आउटपुट. ये हमको increases the AC output, and due to the NDR associated with this tunnel diode, ये जो रेजिस्टेंस है, resistance, normally the capacitance and the inductance, they provide oscillation. Resistance, it actually dissipates. The energy dissipate. So this is being avoided by having an NDR. तो इसको counterbalance करता है. Okay, so the NDR counter balances so that there is no decay. ये जो decay को avoid करना है. That's why जो high frequency devices होते हैं वहाँ पे we use this tunnel diode. ठीक है. Okay, यहाँ तक क्लियर. अच्छा, now let us come to the construction and mechanism involved in the. एक mechanism तो ये है टनलिंग फिनोमेना है, लेकिन how do we actually make it? अच्छा, इन दोनों में जो मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे, एक तो ये वाला डायोड में, this is a normal diode, this is Zener diode. Zener diode operates in reverse bias, RD, right? Whereas tunnel diode operates in forward bias. Okay. Both of them have very high doping. The doping is high in both tunnel diode and Zener diode. Okay. लेकिन there is slight difference in mechanism. Both of them में टनलिंग होता है, टनलिंग यहाँ पर भी होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर दे टनल. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डायोड्स, बिफोर गोइंग टू द टनल डायोड, मैं थोड़ा सा JPN को थोड़ा सा explain करूँ. just having the basic idea, but still there are something which needs to be have a very good concept before going to the details. Okay. अच्छा, so JPN, PN junction diode. इसका बेसिक क्या है? We are taking a P side
Okay. So before any doping, or we call it as a pristine condition, the semiconductor, which can be silicon, can be germanium, basically it is called an intrinsic semiconductor. हमने डोपिंग नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हम डोपिंग करते हैं। पी टाइप करने के लिए किस टाइप का डोपिंग होता है? पी टाइप के लिए ट्राइवैलेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट डोनर। So due to the use of accepted, यहाँ पे होल जनरेट होते हैं। एक्स्ट्रा होल्स, और यहाँ पे क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसके बीच में मैंने जो डॉटेड लाइन दिया है, व्हाट इज दैट रीजन? दैट इज एक्चुअली द जंक्शन। नाउ नॉर्मली मैंने कोई बायस नहीं दिया है। बायस नहीं दिया मतलब मैंने इसके साथ नॉट गिवन एनी वोल्टेज, इट्स ओपन। दिस इज ओपन। Now, even if it is open, there is a concentration gradient. Concentration gradient of electrons and holes. Concentration gradient मतलब क्या? Concentration per distance. So I can write this one as d by dx of holes and d by dx of what? Of electrons. ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इफ आई प्लॉट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिस्टेंस, एक्स इज डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू go in this direction and the holes will try to come in this direction. ठीक है? And they will diffuse through the junction. अच्छा, this region में तुम लोग देख सकते हो since it is d by dx इसका मतलब क्या है कि as we come closer, जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा इसको फोर्स मिलेगा। Concentration gradient gives the force to the charge carriers, है ना? तो जितना नज़दीक आता जाएगा उतना impact on the carriers to cross the junction कम होता है। करते करते एकदम जब जंक्शन भी आ जाता है तो there is a region where they are not able to cross. Right. So this is the immobile region. There are some immobile charge.
Now, whenever a trivalent, for example, let's consider P side. P side में क्या है? Trivalent liquidity आ रहा है. Trivalent liquidity मतलब एल्युमिनियम हो गया, जो भी हो गया. It is giving rise to whole movement. ठीक है. दिस गिविंग राइज टू होल मूवमेंट. होल मूवमेंट मतलब होने का मतलब क्या? मतलब if it is a trivalent, there are three. It is causing the hole to move. That means whenever a hole is this electron, whenever it is forming a hole, it is giving an electron. इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तभी तो होल बन रहा है. तो दैट इलेक्ट्रॉन goes and sets on the traveling nucleus. इसलिए it is formation of negative charges. ठीक है.